And we are happy to share our success stories also with Faisalabad, with Punjab and with Pakistan. I'm sure that many of you have come into contact and in touch with either products made in Finland or innovations or solutions made in Finland or technologies produced by Finland, even without knowing that this is made in Finland. You just think about, I'm sure all of you, actually all of you in your life, certain period of time, you have even held in your hands something made in Finland. And what can that be? Of course, the first mobile phone. The first mobile phone in the world was produced in Finland. And very soon after, the Finnish company Nokia produced the first mobile phone, other countries in the world were looking at that and thinking, well, maybe the mobile phone could be an interesting solution for us as well. And you see today the whole world is using mobile phones. Not many people think where these mobile phones originated, but they came from the University of Oulu in the northern Finland. If you go to the port of Karachi today and you look at the ships that sail to the ports in Pakistan, and if you go on board those ships and you go inside the ship and look and ask the captains, what gives the energy, what gives the power to this ship? Every second ship that comes to the ports of Pakistan is equipped with Finland technology, produced by a company called Wärtsilä. And Wärtsilä is one of the companies that Honorable Mr. Chairman mentioned today, has been on the Pakistani market already for many years. And one of their diesel engines was so energy efficient and so revolutionary that it has been listed under the Guinness Book of World Records. So no wonder Wärtsilä today is active in 130 countries in the world. When you travel to business capitals in the world with skyscrapers, be it Singapore, Shanghai, other big cities in the world, and when you take the elevators, the next time you come to a skyscraper and you press the elevator button, look at the company. Which company has produced these elevators that go so fast up to the 100 floors? And I'm sure you will see the name Kone. Kone Elevator Company is one of the biggest in the world at the moment, also a Finnish company. Kone company was the first one to produce intelligent elevators. And when the constructors of the highest building in the world in Jeddah, the building will be 1 kilometer high, when they were looking at companies who could deliver elevators to take the people up to the 100th floor rapidly, no other company in the world was able to give an elevator that takes them from floor 1 to the floor 100. All the other ones said the cables will be so heavy that you have to change the elevators halfway in between. But the Finnish engineers, they love problems. If there's a problem, if there's an obstacle, if there's a difficulty, the engineers, they love to solve them. And that's what Finnish engineers are famous for. They have the solutions. So within a very short period of time, the engineers from Kone Elevator Company, they said, well, look at our cables. We have produced a cable which is called ultralight cable. And with these ultralight cables, in theory, you can make an elevator going up to 7 kilometers. So 1 kilometer for us is peanuts. So now the constructing company in Saudi Arabia, they will get elevators from the Kone company. That's only one example of Finnish exports that people don't realize these are made in Finland and produced in Finland, but something which is now giving profits to many countries in the world. And this is something which is very typical for Finland export today. Finland is not an export of products or goods. Finland is a country that exports technology and know-how, and we export solutions. And yesterday, when I was driving around your city, and when I've been driving around many cities in Pakistan before, I look at some of the
waste I see along the roads. And if I had a Finnish engineer with me, they would be so happy because they would see, look, here's an asset, here's a possibility, look at all this energy, look at all this electricity that we can get out of the waste. How to change waste into energy and how to change the excessive garbage into energy, that is something where Finnish technology can be very useful for any big city in the world, and I hope will be useful also for Faisalabad and Pakistani cities. If you look at Finland, what kind of a country Finland is, when you fly to Finland you will see it's covered with forests. 70% of the area is covered by forests. We have been using our forest resources for 400 years for commerce and trade and industry. And what is the result of this exploitation of Finnish forests? Can you guess? The result is we have never had as much forests as we have today. Forests have provided us the income, the green gold, and the more we use, the more they grow. How can that be possible? If there is something where Finland is good at, that is sustainable use of natural resources. Why? Because Finland does not have oil, we don't have gas, we are not blessed with natural resources like your country. The only resource we have had for centuries are our forests. And we have had to make sure that our children and grandchildren and the future generations will have the same natural resource. So if there is something we can share with your experts on forestry, that is how to take sustainable use of the natural resources and forest resources. And here I see a good chance to cooperate with your excellent University of Agriculture, because we also come into the field of bioeconomy. Today Finland uses the forest resources not only to produce paper and pulp, because that belongs to the history. You look to the future of the world. The future of the world will be paperless. So what are we going to do today with our forests? I will give just one example and ask Mr. Chairman to tell me, if you take this in your hand, what do you think it's made of? You look at this and you think this is a normal pen made of plastic. But yeah, please, it looks like, please read the text on I the have read. read the text on the pen. Yeah, and 100% wood. It's 100% wood, Only, but it just looks like plastic. Yeah. Only one example how we can replace plastic with organic materials. Yesterday I read the happy news from your government. Your government has taken a very important decision to replace plastic bags in Islamabad. Congratulations. I'm very happy to hear that. Maybe one material could be one alternative. If you have a pen and a paper, please write down the name Paptic. Paptic. Yep. Not paper, not plastic, but Paptic. P-A-P-T-I. And today when you go back to your office, Google in your computers, Paptic, P-A-P-T-I-C, Paptic. This is a material that we produce out of cellulose, out of wood, and that is water resistant. You can carry water in a Paptic bag. It is not paper, it is not plastic, yeah. But it's 100% recyclable. Already now big department stores around Europe are replacing their bags with Paptic. Again, something made in Finland that people don't even realize it comes from Finland, but I believe that will bring a revolutionary change to retailers and to those countries who want to replace plastic with something interesting. Biofuels. Cars run today in Finland with biofuels, also made from our forest resources and wood. And what is interesting,
for the Manchester of Pakistan, for the capital of textile industry. The Finnish women today are starting wearing clothes made of not cotton, not bamboo, but out of cellulose fiber. Cellulose, you get cellulose out of the trees, out of the forests, and you spin it and you make a fiber and you produce clothes that feels like cotton, breathe like cotton, good to wear, healthy to wear, and it doesn't require water to grow. And maybe that could be something for your agricultural university to look into. I would be happy if some of your experts in the textile industry could visit Finland and talk to those experts in Finland who have produced the cellulose fibers. Maybe we could find some areas to cooperate, because I believe that when we put your brilliant young brains together with some Finnish young experts, be it in the field of bioeconomy or other fields, we could see results that are even more revolutionary than what we have seen up to date. Because wherever I go in Pakistan, I see that you have a wonderful, wonderful resource that we are lacking, and that's the younger generation. Your young brains and your young experts are very good at innovating, but sometimes they lack the possibility to market their innovations. So we have the possibilities to market those innovations, so let's work together and let's see what we can do together. I'm very pleased also to tell that Finland has made huge achievements in the field of digitalization. Many years ago, people in Finland thought that if we digitalize the society, that will mean less work for the younger generation. On the contrary, it took us by surprise that through digitalization we have created new jobs and more jobs for younger generation. Now we don't have enough young people to do the jobs, particularly in the health sector. The hospitals have had huge profits from digitalization. Actually, the fastest hospital in the world today is the Children's Hospital in Helsinki, in Finland. The new Children's Hospital, which is a public hospital, it has been labeled as the fastest and the most digitalized hospital. And when you come to Helsinki, please do visit that hospital and you will be amazed how digitalization can serve the purpose of healthcare and how it can make healthcare more efficient. I was very happy that Mr. Chairman mentioned that your Chamber of Commerce is interested also in establishing international contacts. You have recently made a fruitful visit to Manchester. Please keep in mind that we also have a Manchester in Finland, a city that is called Tampere. Tampere is the textile capital of Finland. 150 years ago, a Scottish man called Mr. Finlay. Mr. Finlay moved from Scotland to Finland and he established the first cotton and textile factory in Finland. That factory is still running strong. It's exporting a lot of textiles. It's called Finlayson, named after Mr. Finlay, of course, Finlayson. So whenever you have a chance to make a visit to Finland, please make sure that you include Tampere, the city of Tampere, in your visit. And I will be more than happy to facilitate contacts with any field of Finnish business that you can think of that would be interesting for you. We are very pleased and proud and honored to have 3 honorary consuls in Pakistan. Mr. Asad Ansari, based in Islamabad. In Lahore, we have Mrs. Dure Ahmed. She's out of Pakistan at the moment, but she is representing Finland in Punjab. In the city of Karachi, we have Mrs. Sadia Khan. She's our representative Karachi. And many of you have now received my business cards with my private email address. I will remain at your service anytime. Even though I'm not physically present in Pakistan all the time, we can meet on Skype, we can meet on video conferences, and we can exchange emails. You will also see me on Twitter. My Twitter account is my first name, Harry,
Harri, and my last name Kamarainen. So it's easy to find on the Twitter, and I will of course share my impressions about Faisalabad with Finnish followers on my Twitter account today already. So there are many ways that we can keep in touch. But I will not bore you more with my stories. I will be happy to answer any questions and the comments you have. Thank you very much. My question is regarding what model of ecosystem for the relationship between industry and academia Finland is following. And the second question is that how do you invite the PhD scholars, especially in the fields of social sciences, education, medicine, etc., from Pakistan to Finland? These two models. Thank you. Well, let us start from the possibilities for the students and academia. Now the European Union has a program for countries outside EU where Pakistan is participating. It's called Erasmus Mundus Plus. Erasmus Mundus program provides scholarships for Pakistani students. Who wish to study in European Union universities. And some of our universities are ranked among the 100 top universities in the world. They are not as expensive as American universities. They are not as expensive as British universities or other European universities, but the quality is very high, particularly in certain fields. ICT, agriculture, forestry, and many other fields could be very interesting for Pakistani students. Before I came to Pakistan, I went around Finland universities and I was asking, do you have Pakistani students here? And in most universities they said, yes, we have a few. And I asked, well, how are they studying? And I always got the same answer, that our Pakistani students are among the best of the best. And the surprising thing for me when I met with the Pakistani students was that the majority of the students, the brilliant young Pakistanis, are Pakistani women. And here I want to congratulate your women students who are doing an excellent job, really receiving excellent results in some of our best universities. But what comes to how to combine the academia, the academic studies with the business, here there is an interesting example. One of the first universities in the world to organize the studies on a triangular basis was Finland's Aalto University, AALTO, Aalto University. And what do I mean with the triangular approach? That means you come to the university, if you want to become an engineer, you also have to do business studies, and you also have to do fine arts studies. If you want to become an artist, you also have to do a little bit of engineering studies and a little bit of business studies. If you want to become a good businessman, you also have to do a little bit of engineering studies and you also have to do a little bit of fine arts studies. And I can give you one example what this approach has led to. 10 years ago or 15 years ago, 3 young computer scientists, computer engineers graduated from Aalto University. And they were thinking, well, now we have graduated, what shall we do to earn our living? So one of them said, well, we have done some business studies. Let's think about this from the business point of view. And the other one said, we have done some arts, so let's be creative. And they started creating a computer game, and they knew how to market it. And all of a sudden, after 2 years, these 3 young students, they had more than 1 billion customers, almost the size of a China, all over the world, because they had created the game called Angry Birds. All of a sudden, all children around the world were playing Angry Birds. And they would not have been so successful if these computer engineers had not had studied arts. They knew how to draw the birds, and if they had not had the business studies, so they knew how to market. So the result was that Coca-Cola company was sending their marketing experts to Finland to meet with these Angry Birds representatives to learn how they managed to
to receive more than 1 billion customers in such a short period of time. So that's one concrete example how you combine business with academia. I could give you many more, but please do come and see it for yourself. So thank you very much. With the permission of the President, I am going to quote one thing. Well, Alhamdulillah, I am a postgraduate in cardiology and practicing my cardiology practice for last 31 years in Faisalabad, Alhamdulillah. I am a fellow of American College of Cardiology. Along with that, I have got my master's in HR, in strategic marketing and in IT. And people have been questioning me, how this diversified education. Now, you have already given the answer what I have been searching for years to reply to the people's query. Thank you very much again. Now, sir, may I humbly submit the President to arrange a delegate for the Finland, sir, as you have got a large number of invitations from His Excellency. And of course, Finland is a place for creative innovations, not only innovations, but the creative innovations. Great, sir. Thank you. Now, another question is from Mr. Zulfikar Ali, Agricultural Advisor. Please introduce yourself, sir. Mr. Zulfikar Ali. My name is Zulfikar Ali, Agricultural Advisor. My question is, may I have possible to trade some agricultural commodities from Pakistan, like rice, fruits, and other commodities in the future? Thank you for raising this question and this issue. I must tell you honestly that wherever I travel around Pakistan, particularly in your beautiful region, Punjab, I'm looking with big eyes and seeing so many things, products that my countrymen and women, we are only dreaming about. You have wonderful quality textiles, but not only textiles, also your agricultural products, your fruits and your vegetables. This is something we are only dreaming. We can only dream about that. And sometimes I'm thinking that if I was not an ambassador, I could probably be a businessman starting to import the delicious agricultural products from Pakistan to Finland. I'm sure I would make great success in that because your nuts and your dry fruits and your fresh fruits, your vegetables are of extremely high quality, very tasty and very healthy. So I do hope in the future, when I go to the supermarket in my country, I will see more products from your fields. Please do work on this. रजिस्टर्ड हैं, उनको रजिस्टर्ड करने के लिए उन्होंने ये एक तरीकाकार अपनाया कि हम शनाख्ती कार्ड लें और जो अनरजिस्टर्ड है उसको भी रजिस्टर्ड कर लें। वीविंग इंडस्ट्री में तकरीबन, जैसे वीविंग इंडस्ट्री वाले बताते हैं कि जो बड़ी लूम है एक्सपोर्ट का काम करती है, जिसमें शटललेस भी है, पावर की 105 इंच की लूम भी है, आटो की लूम भी है, वो तो 99% रजिस्टर्ड है। और जो लोकल में हैं वो 50% के करीब जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं उनकी ये बात नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि आप जिस मर्ज़ी लूम वाले के पास चले जाएं तो वो कहता है कि जी मैं बिजली के बिल में ज़ीरो रेट हूँ, तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड है। 15-20% लोग लूम वाले होंगे जिनका हुजम 16 या 20 या 12 लूम का होगा, वो नहीं रजिस्टर्ड होंगे। जो थोड़े बड़े यूनिट हैं वो सेल्स टैक्स के अंदर ज़ीरो रेटेड हैं, बिल इनको ज़ीरो रेटेड आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड हैं। असल जो बात है जहाँ पर आकर ये काम सारा रुकता है, पावर लूम वाला जहाँ अपना कपड़ा देता है वहाँ पर उसको प्रॉब्लम है, वहाँ उसकी इनवॉइस जो है वो नहीं ली जाती। पावर लूम के अंदर लोग या बड़ी लूम के अंदर लोग जो हैं वो कन्वर्जन के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जब वो अपना कपड़ा के बना के सेल करने की बात करते हैं तो उनको फिर सेल्स टैक्स के अंदर
ये मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा, उनको अपना काम शो करना पड़ेगा कि ये हमारा काम है, हम धागा लेते हैं। तो वो एक सिस्टम है, अगर उनको समझ आएगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो वो वहीं कन्वर्जन में रहते हुए अपने सिस्टम को चलाएंगे। प्रोसेसिंग बंद होने की वजह से पावर लूम का कपड़ा आगे नहीं जा रहा, सूतर मंडी से धागा भी फरोख्त हो रहा है। 60-70% पावर लूम जो छोटी है वो चल भी रही है, और जो साइजिंग है वो कोई 16 घंटे चला रहा है, कोई जिसकी 2 साइजिंग मशीन्स हैं वो 1 मशीन चला रहा है। वो अपनी जो लेबर है, जो हमारी पक्की लेबर होती है, जिसको हमने बंद की सूरत में भी हाफ पे करना होता है, वो उसको मैनेज करके अपने सिस्टम को चला रहा है। कुछ हमारे अदारे छोटी साइजिंग के ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसमें चंद एक सदार सेक्टर में हैं और कुछ रहमानाबाद फैज़ाबाद वाली साइड पर हैं यूनिट। तो आज जनरल इजलास रखने का सबसे बड़ा जो हमारा मकसद था वो यही था कि हमने अपने सिस्टम को कैसे चलाना है, हमने अपनी साइजिंग इंडस्ट्री का दफा कैसे करना है, हमने पिछले जो हमारी प्रैक्टिसेस हुई हैं हड़ताल की सूरत में, इसकी तरफ जाना है कि नहीं जाना है। हमने जो एक्सपोर्ट के अदारे हैं उनका हमने क्या स्टेटस बनाना है। जिस तरह प्रोसेसिंग वालों ने किया है, इसी तरह साइजिंग की तरफ अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं, हम उनको किस तरह मैनेज करना है। हम सब ने एक प्लेटफार्म पर रहते हुए अपनी ताकत को भरपूर तरीके के साथ अप्लाई करते हुए फैसलाबाद की साइजिंग इंडस्ट्री, फैसलाबाद की वीविंग इंडस्ट्री, फैसलाबाद की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साइजिंग इंडस्ट्री ने किस तरह बचाना है। सब इकट्ठे इसीलिए आज आए हैं कि अपनी अपनी राय से भी हमें, अपने अपने सेक्टर से भी हमें बताएं। जो आपकी तरफ से हमें फीडबैक आएगा उसके बाद हम एसोसिएशन के लेवल पर एक उसका लाहे अमल बनाएंगे कि हमने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। कुछ चीज़ें हमने सोची हुई हैं, हम उसको तय आपके मशावरत के साथ करेंगे। आज हमारा जंग का सेक्टर भी बिल्कुल बंद है, वहाँ पर 9 साइजिंग यूनिट हैं और एक भी यूनिट सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा हाफिजाबाद भी यहाँ पर बैठा है, आज मैं उनको वेलकम भी करता हूँ। वहाँ पर हमारे 2 साइजिंग यूनिट रजिस्टर्ड हैं 11 यूनिट में से, बाकी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। जब फैसलाबाद के अंदर हम कोई इंतहाई कदम उठाने की तरफ जाते हैं तो इन 2 शहरों की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटी लूम के हवाले से लोग यहाँ से बोरे जो हैं वो वहाँ पर बेचते हैं और वहाँ कैश अपना काम करवा के यहाँ फैसलाबाद में लेके आते हैं। आज ये भी हमारे साथ शामिल हैं और 100% बंद हैं। लेकिन देखें, फैसलाबाद की इंडस्ट्री वीविंग हो, साइजिंग हो, अदर देन जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल का हब होने की वजह से फैसलाबाद की तरफ लोग देखते हैं। हमने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कि हमने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह बचाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरह बचाना है। आखिर पर जो हमारी एसोसिएशन फ़ैसला करेगी हमने उसके ऊपर अमल करना है। और इसके अलावा जो भी मसाइल हैं, सेल्स टैक्स हैं या दूसरे हैं, स्टार्च के रेट बढ़ने की वजह से, सेल्स टैक्स को अप्लाई करने की वजह से साइजिंग रेट में इजाफा करने के जो भी आपने कोई तरीक़ाकार सोचा है, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिसको कहा जाए वही अपनी बात करे, हम ताकि एक दूसरे की बात को समझ सकें और उस पर अपना हम जो लाहे अमल है उसको तय कर सकें। मैं मियाँ अजमल साहब की तरफ जो है वो जाता हूँ कि वो आइंदा का जो हमारा ये जो है जनरल इजलास इसको चलाएँ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।
जी शकील साहब, मैं हाजी तारुक से राना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सेल टैक्स के बारे में हमारे मेंबरान को ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, भाइयों का और खुसूसन बाहर से आने वाले तमाम दोस्तों का, खुसूसन हफ्जाबाद से और चल सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह बैरून से आए हुए सारे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको थोड़ा पीछे थोड़ा सा ले जाता हूँ। इधर शब्बरज़ादी साहब प्लस मिनिस्टर पंजाब के भी और मरकज़ के भी इधर आए थे चैम्बर में पिछले हफ्ते। यहाँ पे तो मान के गए थे कि हम CNEC और ये इस पे सारा कुछ गौर करेंगे और बड़े आराम से मीटिंग करके गए थे। लेकिन उसके अगले दिन ही कराची मीटिंग थी जिसमें वज़ीर आज़म खुद गए थे। तो वज़ीर आज़म के सामने सब ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया हर चीज़ से। तो हम खुद परेशान थे कि जो चैम्बर में खुश कह के गए हैं और ऊपर जाके दूसरे दिन कराची में, हालांकि वहाँ फटीशन भी बैठी थी, कराची के बड़े बड़े ताजर बैठे थे, सब बैठे थे। वहाँ फीस बादशाह ने कहा कि मैं आपको वज़ीर आज़म के सामने कहता हूँ कि इसमें कोई लचक पैदा नहीं होगी। ये अल्फाज है उसके, ना 17% में ना CNEC में। तो फिर वहाँ पे जो हुआ वो कईयों ने वीडियो पे देखा होगा, अपने सारे क्लिप्स चले हैं उनके झगड़े के भी, सारा कुछ जो भी हुआ। बहरहाल वो वापस चले गया। कल उन्होंने इधर बुलाया हुआ था हमारे सारी एसोसिएशनों को। तो इससे पहले एक मीटिंग हमें फैसलाबाद चीफ कमिश्नर साहब और उनके साथ जितने 7 कमिश्नर होते हैं वो सब ऑनलाइन थे और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की कि आपके मसाइल और आपका रिफ़ंड कितना है। रिफ़ंड की जो उन्होंने लिस्ट निकाली है वो सिर्फ 27 बंदे निकले और तकरीबन सारा 10 करोड़ रुपया निकला। वो कहते यार इसके लिए आपने इतना शोर डाला हुआ है, तो आपने अप्लाई भी नहीं किया और अपने कह भी रहे हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं हम स्टेप बाय स्टेप पहले छोटों को फिर बड़ों को दे देंगे, आप अप्लाई कराएँ फ़ौरन। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये एक अपने आपको पिछले इजलास में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कागज़ एक मिला होगा जिस पे 134% टैक्स बनता है जो कास्ट का हिस्सा बन जाता है। ये वो कह रहे थे बार बार कि ये कैसे बनता है। हमने उन्हें बताया कि अपने स्पिनिंग से लेकर यार मार्केट और वीविंग और साइजिंग पे आके 17%, बिजली पे 17%, सुई गैस पे और सब पे देंगे। आगे जो आड़ती है यहाँ पे आके चेन टूट जाती है, इसलिए ये कास्ट का ऐसा बन जाएगा कि ये रिफंड हमें नहीं मिलेगा। किससे लेंगे हम लोग? वो कह रहे थे कि जी अपने रिफ़ंड होता भी है। हमने कहा ये सारा फिर दूसरे तरीके से होता है कि हम माल किसी का, जैद का, बकर का, मोहम्मदियन का, महंगे का, फलां का साइजिंग करते हैं। एक्सपोर्टर अपनी इनवाइस बना लेता है, सारी लूमें स्टाम्प पे ठेके पे ले लेता है, कन्वर्जन पे एक्सपोर्टर। वो अब भी ऐसा ही होना है। जो अगर उन्होंने चेकिंग कर ली तो फंस जाएंगे, अगर ना की तो ये वही फिर फुद्दू चलेगा जो पहले चलता रहा। लेकिन उन्होंने इसका फ़ौरन जवाब दे दिया कि ये हमने सारा सिस्टम इस दफ़ा बिल्कुल पैक कर लिया है, कोई बंदा फ्लाइंग इनवाइस नहीं काट सकेगा। मैंने कहा फिर आप छापे मारेंगे? कहते वो बात की बातें हैं, पहले आप इसको अपने कबूल तो करें ना। मकसद ये है कि इसमें अब अगर आप CNEC लेते हैं तो फिर तो असल मालक आ गया सामने। अगर वो रजिस्टर है या न रजिस्टर है फिर भी CNEC से सारा कुछ सामने आ जाएगा। उसकी सेलें साल बाद वैसे बाहर आ जानी है। वाइट मनी है या नहीं है वो उसका मसला है। जिसकी 200 लूम है या 100 लूम है, वो कितने बोरे 1000 बोरा लेता है वो आपके पास भेजता है। वो अपने किसका शनाख्ती कार्ड देगा या अपना नंबर देगा, क्या वो शो कर सकेगा? अगर तो लूम वाला आपको ऐसा कोई मिलता है फिर तो आप काम करें, दिल खोल के करें, कोई ऐसी बात नहीं। आपने तो उसकी असल इनवाइस काटनी है, 17% देना है। तो जो कास्ट आपकी बड़ी है जिसमें केमिकल है सारा कुछ है वो बढ़ा के रेट बढ़ा लें और 17% ज़्यादा ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई साइजिंग का मसला नहीं है, बल्कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर इसको तरीके से ना चलाया गया तो फिर वो साहब का जो दौर रहे हैं, जो 2005 तक 17% रहा है, पहले भी रहा है, ये एक्सरसाइज हो चुकी है। वो पहले यही था कि हम इनवाइस किसी की काटते थे, माल किसी का होता था। ये अब चक्कर वो बार बार हमें कह रहे हैं कि आप आड़ती को छोड़ दें,
आगे प्रिंस होलसेलर को छोड़ दें, आगे परचून को छोड़ दें, ये हम खुद चेक करेंगे। ये हमारा मसला है। अब रिफ़ंड वैसे नहीं होगा कि हमने कहा था आपने अगर 50 अरब रुपया इकट्ठा किया तो 85 अरब रिफ़ंड हो जाता है। तो कहते हैं ये अब बातें पुरानी हो गई हैं, अब नया दौर आ चुका है, हमारे पास सिस्टम आ गए हैं जिससे हम उसी वक्त चेक कर लिया करेंगे 1 महीने बाद ही। तो वो जो फिर अपनी एक दफ़ा फंसेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि कैसे फ्लाइंग काटते हैं। इसमें रेडे भी चेक हो सकते हैं, आपके गेट पास भी चेक हो सकते हैं, आपके डिलीवरी आर्डर भी चेक हो सकते हैं। ये मामला जो है ना, ये सारा सा सोच समझ के करने वाला है। अगर बाज़ाब्ता तौर पे वाकई आप एक्सपोर्टर का काम करते हैं तो नो प्रॉब्लम, फिर आप बिल्कुल उसका खुले दिल से करें, कास्ट का हिस्सा बढ़ाएँ, 17% अलहदा ले लें, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं, बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर होकर देगा। तो मकसद यह है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए, फिर तो कोई तंग नहीं करेगा। वरना उनका प्रोग्राम जो है ना, वो 2-4 अदारों पे बैठ के 40 भी लगाएं या वैसे चेक करें जो उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने एक दफ़ा आपको चेक करना है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे जो तजर्बे में है, वो आज तक ना हम चर्बी शो करते हैं, ना हम लकड़ शो करते हैं, ना हम चावल शो करते हैं। ये सारी चीज़ें सामने आनी हैं। और अब इसका हमने फिर विद होल्डिंग टैक्स खुद जमा कराना है उन लोगों का। 4.5% हो चुका है, कानून बदल जाए कल को मुझे नहीं पता। अभी 4.5% विद होल्डिंग टैक्स हो गया, जो पहले 2% था। इसी तरह सेल टर्नओवर सेल जो थी पहले 1.5% अपने 1.25 थी, अब 1.5 हो गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1% कर देंगे, लेकिन वो कल को कानून आ जाते हैं तो, लेकिन वो तो शायद फिर नीचे आ जाए। ये 17% नीचे आना, क्योंकि उन्होंने की शर्ती जो है ना, वो नज़र आ रही है कि वो IMF से तयशुदा है।